નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, this is part 2 of chapter 3, how many squares of standard 5th mathematics. In the last part we discussed or we cleared the concepts of area and perimeter, isn't it? Now let's go in this part. Measure stems. Here in this box you can see some different postal stamps are there, and that to be in the 1 centimeter square. See, this is A, this is B, C, D, E, F, and let's see how many squares it requires. See, suppose A is there, then there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, and here 1, 2, 3. So 6 3 ja 18 squares it requires. Now in B, 2 and 4, 2 4 ja 8 squares it requires. In this C, it requires 3 2 ja 6 squares. Then in D stem there are 1, 2, 3, 4, and here also 1, 2, 3. So 4 3 ja 12 squares it requires. This stamp E requires 4 squares, and once again stamp F requires 3 4 ja 12. So here we can say this A is the biggest stamp. Why? Because it requires 18 squares, as well as stamp D and stamp F both requires 12 squares. Okay, that what we conclude from this picture. Now let's go further. Look at these interesting stamps. How many squares of 1 centimeter side does stamp A cover and stamp B? That is our question. Before that, let's see this one. Stamp D covers 12 squares. Each square is of side 1 centimeter. Here there is stamp D. It covers 12 squares and each square of side 1 centimeter. So the area of stamp D is 12 square centimeter. So the area of stamp D is 12 square centimeter. Why? Because it requires 12 squares and each square is of side 1 centimeter. That is why the area of D is 12 square centimeter. Now let's answer this exercise. See, here stamp A is there, and our question is how many squares of 1 centimeter side does stamp A cover? And previously we count it is 18. So 18 squares is answer. And stamp B, here is stamp B, 2 4 ja 8. So 8 squares. Let's go further. Which stamp has the largest area? How many squares of side 1 centimeter does this stamp cover? How much is the area of the biggest stamp in square centimeter? Let's answer first one. Which stamp has the biggest area? We know that this stamp A has the biggest area. How many squares of side 1 centimeter does this stamp cover? Now, first of all, remember this formula. Let me tell you, this is a formula to find out area. Okay, and what is that? Area is equal to length multiplied by breadth. That is a formula, and remember it. Why? Because it will always helpful to you. So remember it. Now our question is how many square of side 1 centimeter does this stamp cover? So length of stamp A. Now we want to find out the area, and the length of A is 1, 2, 3, 4, 5, 6.
So 1 plus 1 plus 1 same way 6 centimeter. And breadth of stem A is equal to 1 plus 2, 3, 3. So it is equal to 3 centimeter. Thus area of stem A is equal to length multiplied by breadth. Now length is 6 centimeter and breadth is 3 centimeter is equal to 6 is 18 square centimeter. Thus the area of biggest stem is 18 square centimeter. Now which two stems have the same area? We discussed earlier that stem D and stem F have same area. Why? Because let's see the answer. Stem covering same number of squares will have same areas. Stem covering same number of squares will have same areas. Here you can see stem D covers 12 squares as well as stem F also covers 12 squares. See, let it be this is something landscape, this is something like portrait, but both are covering 12 squares. And stem covering same number of squares will have same area. So this D and F both covers same number of squares. That is why D and F both have same area. Then next let's go further. Here stem D and stem F both cover 12 square with same one cent. Area of each stem is equal to 12 square centimeter. So here the answer will be 12 square centimeter. Now let's go further. D. The area of the smallest stem is blank square centimeter. Here is the answer. Stem E, which covers the least number of squares, that is 4, has the smallest area. ये जो स्टेम E है वो सबसे कम स्क्वायर्स कवर करता है. ओके, सो स्टेम E has the smallest area. The area of the smallest stem is equal to 4 square centimeter. Okay, so this is the answer. The area of the smallest stem is equal to 4 square centimeter. The difference between the area of the smallest and the biggest stem is blank square centimeter. See, the difference between the area of smallest and the biggest stem is equal to 18 minus 4 is equal to 14 square centimeter. We know that the biggest stem is A and it covers 18 squares, है ना? And the smallest is E, which covers 4. So 18 minus 4 is equal to 14 square centimeter. Collect some old stems, place them on the square grid and find their area and perimeter. Now you should be on the page number 35. Let's go the further slide. Now it is on the page number 36. How many squares? Guess which has the biggest area, one of your footprints or the page of this book. किसका बिगर एरिया है? एक तो आपका फुटप्रिंट और दूसरा पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक ऑफ 5th मैथमेटिक्स. तो किसके बिगर एरिया होगा? चलिए देखते हैं द आंसर. The area of page of this book has the larger area than the footprint. अपनी जो टेक्स्ट बुक होती है ना उसका एरिया लार्जर होता है कंपेयर टू द फुटप्रिंट ऑफ आवर फीट. ओके, देन द अनदर क्वेश्चन इज विच हैज द स्मॉलर एरिया, 2 5 rupee नोट्स टूगेदर और ए 100 rupee नोट. अब देखिए पहले क्वेश्चन समझिए, किसका स्मॉलर एरिया होगा? अब किसका एरिया है? पहले तो एरिया ऑफ 2 5 rupee नोट्स टूगेदर. तो हमने 2 5 रुपये की नोट रखनी है और दोनों का जो टूगेदर एरिया जो दोनों का होता है उसका एरिया या तो 100 rupee नोट का एरिया. आप समझ गए होंगे. तो लेट्स आंसर दैट.
A 100 rupee note has the smaller area than the area of 2 5 rupee note kept together. This is the answer. आप समझ गए होंगे. Let's go further. This is on the page number 36. Guess. Now C is there. Look at a 10 rupee note. Is its area more than 100 square centimeter? पहले आपको क्या करना है, 10 रुपी नोट को देखना है और उसका जो एरिया है वो मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से ज़्यादा है. पहले मैं आपको बताना चाहूँगा व्हाट इज़ 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, वो आपको पहले पता होना चाहिए. चलिए यहाँ पे ही समझा देता हूँ. 100 स्क्वायर सेंटीमीटर कैसे होता है, तो सपोज ये एक स्क्वायर है जिसमें 1 2 3 4 5 करके 10 हुआ. कितना हुआ, इधर 10 और फिर इधर भी 10, 1 2 3 4 5 करके कितना होगा 10. तो उसका जो टोटल 10 और 10 सेंटीमीटर स्क्वायर्स जो होंगे तो वो जो एरिया है वो बड़ा होगा कि ये जो 10 रुपी नोट है उसका एरिया बड़ा होगा. आप समझ गए ना. लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन. No, the area of 10 rupee note is less than a 100 square centimeter. मतलब के 10 रुपी नोट का जो एरिया है वो कम होगा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से. देन क्वेश्चन डी. इज द एरिया ऑफ द ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ येलो शेप? वाई? चलिए पहले ये दोनों शेप देख लेते हैं. देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसको यहाँ से आधा कर दिया है तो उसके दो ट्रायंगल हो गए. देख रहा है. सेम वे यहाँ पे एक बड़ा ट्रायंगल है, उसको यहाँ से आधा काट दिया है तो यहाँ पे भी दो ट्रायंगल हो गए. ठीक है. सो अब देखते हैं आंसर. हियर वी कैन सी दैट बोथ द येलो एंड ब्लू शेप फिगर्स are divided into two equal triangles. Here this yellow rectangle and blue triangle both are divided into two equal triangles. दोनों को दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया है, इसको और इसको, रेक्टेंगल और ट्रायंगल को. Also we can see that the area of each triangle of the blue shape is equal to the area of each triangle of yellow shape. अब देखो येलो शेप में जो ट्रायंगल है उसका एरिया है और ये जो ब्लू शेप में जो ट्रायंगल है उसका एरिया है. बोथ आर सेम. ठीक है. Thus the area of blue shape is equal to the area of yellow shape. That is why the area of blue shape is equal to the area of येलो शेप. चलिए आपको समझाता हूँ. एक्चुअली ये क्या किया है, ये जो दो ट्रायंगल है ना तो उसको देखना, शांति से समझना. ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल, इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ पे सेट कर देता हूँ. इसको यहाँ से लिया और कहाँ पे सेट किया, सपोज यहाँ पे सेट किया तो ये जो शेप है अपना, ये जो पूरा शेप है वो बन गया इसके जैसा. हो गया कि नहीं. सो अब दोनों शेप सेम हो गए. या तो दूसरी बात बताऊं, अगर ये जो शेप है उसका जो ये ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल मतलब ये वाला ट्रायंगल, उसको लेके अगर मैं यहाँ पे सेट कर दूँ तो देखिए इस तरीके से सेट हो गया तो ये एक पूरा रेक्टेंगल हो गया. वो ये है. आप समझ गए. अब आप इसका आंसर समझने की ट्राई करना, देन यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी क्विकली एंड वेरी इजीली. लेट्स गो फर्दर. फिर क्वेश्चन ई है. इज द पेरीमीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन द पेरीमीटर ऑफ द ब्लू शेप? वाई? अब यहां पे पेरीमीटर की बात आई. व्हाट इज पेरीमीटर? टेल मी. The sum of size of
the all sides, ओके, सम ऑफ साइज ऑफ द ऑल साइड्स। तो इसका जो ये सभी साइड है उसका मेजर का जो सम करते हैं उसको बोलते हैं पेरीमीटर। तो अब क्या बोला है कि ये दोनों का पेरीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ येलो शेप। इसका जो पेरीमीटर है वो ये ब्लू शेप है उससे ज़्यादा है क्या, और है तो क्यों? चलिए आंसर नो। नो, द पेरीमीटर ऑफ येलो शेप इज लेस देन द पेरीमीटर ऑफ ब्लू शेप। पेरीमीटर ऑफ येलो शेप, इसका जो पेरीमीटर है ये सभी इज लेस देन द पेरीमीटर ऑफ ब्लू शेप। With the help of a ruler, we can find that length of boundary of blue shape is more than the length of the boundary of yellow shape. अब चलिए ये जो लेंथ ऑफ ब्लू शेप, बाउंड्री ऑफ ब्लू शेप, अब आपको क्या करना है, मेजर करना है, अपनी स्केल से इसको बाउंड्री मेजर करनी है। मतलब इतना, इतना और इतना, ये इसकी बाउंड्री हुई, वो आपको स्केल से मेजर करनी है। तो ये बाउंड्री जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू दी बाउंड्री ऑफ दिस येलो शेप, एंड द मेजर ऑफ बाउंड्री इज व्हाट, पेरीमीटर। ओके, सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। मतलब के फिर से देख लेते हैं। नो, द पेरीमीटर ऑफ येलो शेप इज लेस देन द पेरीमीटर ऑफ ब्लू शेप। येलो शेप का पेरीमीटर ब्लू शेप से कम है। With the help of a ruler, we come to find that the length of boundary of blue shape is more than the length of the boundary of yellow shape. So this is the answer. And with this, I think our session is over here, and we'll meet in the next session. Before that, you watch this video 3 to 4 times so that you can understand these concepts. Thank you for joining us. Take care of yourselves and we'll meet you in the next session. Thank you.